हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी जंगीरा कैनविन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। कीपिंग दिस होप अलाइव, लेट्स वेलकम डॉक्टर टी के प्रसाद, who is a well-known, well-experienced ENT surgeon and ENT specialist working here in Gurugram with CanWinn Foundation. Let me update my audience that Dr. T. K. Prasad holds a rich experience of 30 years in which he has provided so many health services to the Delhi government and also received state government award for the same. So Dr. T. K. Prasad, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you so much. Please introduce yourself to the viewers. Yeah, thank you so much for giving me the opportunity to present my topic today on the stage of CanWinn Foundation. I am Dr. Prasad, practicing for the last 30 years in and around Gurugram and Delhi NCR. And I have worked with all the major Delhi hospitals like Ramanole Hospital, Safdarjung Hospital, Batra Hospital, and also with the Delhi government for 20 years. And I have the experience in major ENT like micro ear surgery, microlaryngeal surgery, rhinoplasty, endoscopic sinus surgery, and various endoscopic procedures in ENT. Thank you. I must say, आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रसाद, और पहले भी हम आपको एक इंटरव्यू कर चुके हैं जिसमें हमने ऑटोमाइकोसिस के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम दोबारा अपने व्यूअर्स के सामने हैं और लाइव है। और आज हम एक नया टॉपिक टिनिटस, जिससे आम जनता अनअवेयर है कि वो क्या होती है। कई बार हमारे कानों में ऐसा होता है कि लगातार घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है या एक विजलिंग साउंड होती है और हम उसको अवॉइड कर देते हैं कि जस्ट चलने दे, चलने नहीं देना है, क्योंकि कई बार यही बीमारी जाके आगे बहुत सीरियस बीमारी का जो है टर्न ले लेती है और हमें इलाज के लिए भागना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम इसको नज़रअंदाज करते हैं तो कई बार हमें सुनना भी बंद हो जाता है। तो आइए आज इसी बीमारी के बारे में, इसके कारण और निवारण के बारे में हम जानते हैं डॉक्टर प्रसाद से। सो डॉक्टर प्रसाद, मेरा पहला सवाल ये पूछना चाहता है कि व्हाट इज टिनिटस? Yeah, tinnitus is subject to hearing of abnormal sounds in the ear. It could be a simple or a complex sounds, and it's more subjective means patient खुद अपने अंदर कान के अंदर सीटी बजना महसूस करते रहते हैं. That's called tinnitus. Right. So डॉक्टर प्रसाद, आपने बताया कि सीटी बजती है, घंटी बजती है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण रहते हैं। आज से पहले हमने कभी कारणों को जानने की कोशिश नहीं करी। एक नॉर्मल हम एक ज़िंदगी लीड करते कि हाँ जी हमें घंटी सुनाई देती, आवाज़ सुनाई देती और अपने आप ठीक हो जाएगी। बट अब ये मेडिकल फील्ड ने अगर इसको खोज लिया है और ये बीमारी पहले से चल रही थी, तो मैं जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों को पता चले कि इसके क्या कारण होते हैं या क्या कॉजेस होते हैं। Exactly. So like as we think that tinnitus is a simple buzzing sounds, it's not exactly simple, but it has various causes starting from the brain till the ear. So दिमाग से लेके कान तक बहुत सारे चीज़ें की वजह से कान में सीटी बज सकता है। तो आप समझ सकते हो कि दिमाग से कान तक जा रहा है, इसका मतलब इसका अहमियत क्या है। दिमाग में ट्यूमर्स हो सकते हैं, दिमाग में वैस्कुलर ट्यूमर्स हो सकते हैं, वैस्कुलर कंडीशंस में होते हैं, एंड ऑल्सो लाइक दिमाग से अलावा नीचे की तरफ जैसे आते जाएंगे तो ब्रेन स्टेम में कभी ट्यूमर्स होते हैं। उसकी वजह से भी कान में सीटी बजती है, जो कान के सुनने की नर्व में या बैलेंसिंग नर्व में कभी सूजन हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है। और ख़ासकर फ्रॉम द ENT पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊँ तो कान के अंदर जो इनर ईयर या मिडिल ईयर या एक्सटर्नल ईयर 3 पार्ट्स होते हैं। तीनों में कई सारे लीजन्स होते हैं जिनकी वजह से कान में सीटी बज सकता है। खासकर आजकल देख सकते हो कि कई लोग ब्लूटूथ यूज़ करते हैं लगातार, एंड जिसकी वजह से रेडिएशन होती है जो कान के अंदर नर्व डैमेज होता रहता है, जो महसूस नहीं करते हैं यंगस्टर्स, एंड आफ्टर सम टाइम दे लैंड अप इन buzzing sounds in the ear. And also because of trauma also, it could be a trauma because of various like फटाके फोड़ सकते हैं या excessive sounds in the marriages, like high being sound या louder कुछ drums या DJ वगैरह में जाते हैं लोग, तो इसमें से बहुत सारे डैमेज होते हैं, पर्टिकुलरली नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो बोलते हैं, जिसमें 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड्स
Okay. 8 घंटे से ज़्यादा सुनेंगे continuously, Okay. that can cause permanent damage to the ear nerve. Okay. And also it start producing spontaneous sounds जो हम बोलते हैं कि tinnitus. तो पेशेंट बाद में महसूस, उस टाइम में मज़े में डांस करते हैं, सुनते रहते हैं, बाद में परेशान होते हैं कि मेरे कान में सीटी बजना शुरू हो गया. Okay. And also sometimes various reasons like medicine induced. Okay. So many medicines can cause, antidepressant medicines, Okay. anti-anxiety medicines, Okay. tuberculosis treatment, Okay. chemotherapy medicines, Okay. and also diuretics. These all medicines, they have a lot of side effects. Okay. So some of them, they can cause hearing loss and also buzzing sounds in the ear. Okay. And also like so many other causes like wax. Simple thing like wax can also cause buzzing sounds in the ear. Okay. And also because of sinus infections होते हैं patients में, तो एलर्जी से होता है जिसकी वजह से कान बंद हो जाती है, Right. जिसकी वजह से कान में सीटी बज सकता है. Okay. And also like tumors in the ear. Okay. So sometimes very close to the ear there could be small tumors. They, because of the vessel के अंदर blood supply इतना fast move करता रहता है उस ट्यूमर में, वो sounds कान सुनता रहता है. तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि दिल का धड़कन धक 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 जैसा होता है, वो साउंड्स महसूस करते हैं, बिकॉज दैट इज रिलेटेड, दैट वैस्कुलर ट्यूमर्स दे आर सप्लाइड विद द हार्ट बीट का सेंसेशंस उसके थ्रू कान सुनना शुरू कर देता है. Okay. तो देयर आर सो मेनी कॉजेस लाइक दीज थिंग्स. एंड ऑल्सो वन थिंग विच इज अदर देन दीज थिंग्स इज ऑडिटरी हैलुसिनेशंस बोलते हैं. Okay. इसमें साइकेट्रिक पेशेंट दिमाग के प्रॉब्लम्स होती है, Okay. जिनके अंदर वो लोग स्पीच फॉर्मेशंस का साउंड सुनते रहते हैं. Okay. It's a completely different phenomenon where you Alright. have to take the psychiatrist help also. Opinion also. So these are most common causes which can cause. And Yeah. also industrial workers, police people. Okay. Police are working on the road and at the cross sections, continuously listening to vehicular traffic, honking. I know. So all these things, they are exposed to continuous sound. Okay. They are at the mercy of receiving end to Reasons. get all these Okay. buzzing sounds. When they are young, they may not be able to, but when they I become old, they can get all the side effects. Yes. So Dr. Prasad, I think you have shared multiple reasons कि which can lead to tinnitus, जिसको हम अवॉइड करते जा रहे हैं. कि आपने बता दिया कि स्टेरॉइड्स लेने से या मल्टीपल हम जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं या हम लगातार आवाज़ सुनते रहते हैं, लाउड म्यूजिक सुनते रहते हैं, एंड इट कैन लीड टू अ सीरियस हियरिंग लॉस ऑल्सो. सो अगर हम बात करें शुरुआती लक्षणों की सिम्टम्स को लेकर कि जिससे हम बच सकते हैं इस बीमारी से, तो मैं चाहती हूँ आप व्यूअर्स को बताएं. Yeah, it's basically after, as a doctor, we take the complete history of the patient. Okay. कैसा शुरू हुआ, कैसा चल रहा है, कितना दिन से चल रहा है, कितना frequently हो रहा है, Right. और what is the reason, what is the causative factor for the thing. Okay. And patient जिस हिसाब से, जैसे diabetics, sometimes they can also have these buzzing sounds in the ear. Okay. And neurological, they get other neurological problems. They get this neurological problem in the Okay. ear also. They are called tinnitus. Okay. And so, depending on the reason, history taking, then local examination in the ear. We examine the eardrum, any wax is there, eardrum is intact or not, Okay. whether there is any infection in the ear, Okay. or if there is any fluid accumulation behind the eardrum. And various other investigations like hearing testing, puriton audiometry, tympanometry, and also in case if you suspect that patient is also having other symptoms, सिर्फ buzzing sounds होना क्या एक चीज़ नहीं है, इसके साथ साथ समटाइम्स पेशेंट को लगता है कि चक्कर भी आ सकता है, Okay. सिर में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है, एंड ऑल्सो सुनाई तो कम होता ही है साथ Right. साथ. If these things are also like associated with the buzzing sounds, Okay. वो उन पेशेंट्स को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा. Okay. इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के कि सिर्फ कान में बज रहा है, वो सिंपल, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द केसेस इट्स सिंपल बजिंग साउंड्स, इसके लिए कोई रीज़न नहीं होता. Right. ये भी एक अच्छी चीज़ है कि रीज़न नहीं है, उनमें से 90% होता है. Okay. बाकी 10% जो लोग हैं वो ये ना सोचने कि मेरा नॉर्मल इडियोपैथिक है, Right. कोई रीज़न वाली बात है, वो नहीं है. वो लोग केयरफुल, इसलिए हर कोई जो भी कान में सीटी बजती है, दे शुड विजिट द डॉक्टर एंड गेट एग्जामिन्ड दैट व्हाट्स द रीज़न and rule out the any other major issues in the from the ear to the brain. Right. Not that it is on the ear. Right. So viewers, you note this
कि इमीडिएटली जो है हमें डॉक्टर के पास रश करना चाहिए अगर हमें बजिंग साउंड सुनाई देती है। इसके अलावा कई बार ऐसे भी सिम्टम्स डॉक्टर ने शेयर किए हैं कि हमें सर में दर्द हो रहा है, एक वैक्स फॉर्मेशन सी फील हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, जिनको हम सोचते हैं मामूली चक्कर ही तो है, सर दर्द ही तो है, दवाई खा लेते हैं, पर नहीं, हमें एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और टाइमली दिखाना चाहिए। सो डॉक्टर प्रसाद, सिंस यू हैव शेयर्ड द सिम्टम्स, कॉजेस, तो हाउ वी डायग्नोज इट? जब हमारे को ये प्रॉब्लम होती है और हम आपकी जैसे एक माहिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि वी आर सफरिंग? Yeah, basically depending on the history and other issues with the patient, history plays a major role in diagnosing the problem in these patients. All right. Second thing is local examination, and third is, as I said, investigations like pure-tone audiometry, tympanometry, and sometimes contrast MRI also is needed, depending if you suspect that there is a possibility of any tumor from the ear to the brain level. Okay. And so these are the common examination, and also like some thyroid issues. If somebody has hyperthyroid disease, where the heart pumps blood very fast, and there is a hyperdynamic situation in the body where the sounds are heard in the ear. So if there is any thyroid issues, they are not. We have to investigate. Diabetes हो तो diabetes control में है या नहीं, डायग्नोसिस नहीं हुआ तो चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से मिस हो रहा हो पेशेंट, और उसको हमें अलर्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ होने की प्रॉब्लम है, आपको इसका इलाज करवाना पड़ेगा। वेरी वेल से डॉक्टर प्रसाद। तो आजकल की प्रेजेंट सिनेरियो की बात अगर हम करते हैं, और हमने देखा है कि पहले ज़माने में ये केसेस बहुत ही कम सामने आते थे, या हम घर में ही अपने आप ही डील कर लेते थे कि चलो भाई तेल डाला और वो कुछ दादी माँ के नुस्खे तो वो ट्राई किए और गरम तेल डाला और शायद कान साफ हो गया या आवाज़ ही बंद हो जाएगी और कान का मैल भी निकल जाएगा। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो टिनिटस के केसेस बहुत ही परमानेंट हो गए हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट हमारे पास केसेस आ रहे हैं। तो क्या रीजंस हैं इसके पीछे? Basically, as I told, the reasons from ear to the brain, there are so many causes which are creating this problem. So we should not simply take that कान में तेल डालने से problem solve हो जाएगा, वो पुरानी बात थी। आजकल हम देख रहे हैं as a ENT surgeons throughout the country and the world, it's around 6% of the population is having this tinnitus problem. So हम 100 करोड़ लोग हो तो 6 करोड़ लोगों को ये प्रॉब्लम है. It's not a simple quantity. It may increase with time because of the lifestyle changes and also because of professional changes. Like people are exposed to industrial noise, exposed to sounds on the road, noise pollution, excessive honking, and also because of lifestyle, in the sense people keep using so many devices, particularly Bluetooth devices. A lot of radiation is happening, and also sometimes as you see, it's a rare case, but very few cases, but domestic violence. People keep slapping their partners or children, and sometimes that can cause damage to the ear, and they also land up in buzzing sounds called tinnitus in the ear. कान में सीटी बज के आते हैं कि मेरे कान में सीटी बज गया, दर्द हो रहा है. So we have to investigate what's the reason, and so many, and also professional cases, professional problems like psychiatric problem, like a lot of anxiety is happening in the society. So much psychosomatic disorders, and people are having a lot of stress. Stress increases the incidence of tinnitus in the body. So we have to, like as I said in the beginning, it's a auditory hallucinations. Patient को आवाजें सुनाई देती है. It's not simply झिंगूर बज रहा है या सीटी बज रहे है या कोई वॉशन की आवाज आ रही है, ये नहीं है. This complete voices they keep hearing. कि किसी की दूसरों की आवाजें आती रहती है. So that is a psychological problem, psychiatric issue. Then they have to consult the psychiatrist also. So then why it is important to treat this disease? My question is this, कि हम लोग जिसको अवॉइड करते जा रहे हैं, इतना आपने बताया, मल्टीपल फैक्टर्स बता दिए, आपने कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम मॉडर्न टाइम में गैजेट्स को यूज़ कर रहे हैं, लाउड साउंड्स को सुन रहे हैं, एक तरह से स्ट्रेस भी रीज़न है जो उसको बढ़ाता है. तो अगर हमने इस बीमारी को नज़रअंदाज किया तो आगे क्या हो सकता है, ये जनता को बताएं. Yeah, basically it's an
alert to the public that you should aware of the reasons behind this simple problem like tinnitus. It's not simple, but it has a lot of ramifications in the body and to the person who is suffering. So, see, early diagnosis always makes the treatment simple and also curable. So, that's very important. If there is a preventive issues are there, treatment issues are there, surgical issues are there, medical treatments are there. So, we can treat if the patient comes to the ENT surgeon or a neurological surgeon, neurologist or a neurosurgeon. So depending on the condition, the patient is diagnosed. Okay. So once the patient is diagnosed with tinnitus, what are the treatment modalities available, Dr. Prasad? Exactly. It's the important thing, like you asked, it's first thing is prevention. Okay. If you know that the causative factor, Okay. if it is an industrial worker having Right. tinnitus, Okay. they should take all the precautionary measures like using the earmuffs Okay. when they are working in the industries. Yes. The administration should ensure that the workers are complying with the standards of how to prevent noise-induced hearing loss. Okay. And if somebody is a policeman working on the street, they should also have less exposure to the sounds. They Very should true. have frequent changes in their duty hours. They should not be exposed for long Yes. hours. Or if the public also should aware that they should not honk excessively to Yeah. cause the damage to other person who is working for us. And also prevention in the sense like if you come to know that this particular medicine is causing the problem for me, they should tell the treating doctor that, doctor, I'm having buzzing sounds which are not there before this treatment started. So if you know if you want to know the list of medicines, that's so vast. It's very difficult to remember. But there are a huge number of medicines which are causing this type of side effects. Okay. So if you tell the doctor, they will also, there are alternative medicines which will reduce, or they will reduce the dosage, or they will give some medicines which are important to counteract the side effects of medicine which is causing the this problem. Right. Or if like treatable causes, like if there is any treatment for wax is there, if there is a prevention, how to prevent wax formation, you should consult the doctor. True. And also like sinusitis infections are there, they should prevent sinus infections so that which can cause also this problem. And so like if you are exposed to a lot of radiations, you should also prevent using gadgets which are Bluetooth things, particularly which are electromagnetic radiations. वो सब छोड़ के कम से कम करें और speaker phone use करें जितना possibility है, not to use any gadgets which can cause damage to the ear. And so these are the few important things prevent infections into the ear. Like people go to swimming pool, they land up in infection in the nose, sinus, and they come to the doctor that I'm getting pain in the ear. It's not simply pain that can cause damage to the ear also. Yes. So if there is any possibility of injuries to the ear, whatever possibilities, take all precautions while driving and on the roads or on the wherever you are possible, even in the air travel. Sometimes while your takeoff and landing, particularly flight mein ja rahe ho, aajkal it's air travel is so common. I know. People, they come with sometimes, most of the time they come with ear block. Sometimes they get ear damage also. Yes, many times we noticed it. So if the air travel is causing any problem, you should take precautions. If you are having cold, you should not travel you should avoid travel. Okay. Or even if want to travel because of compulsion, you should take precautions to control the nose infections, sinus infections, and possible precautions how to take care of yourself while takeoff landing. Particularly, you should not sit idle. You should keep swallowing your own saliva or keep swallowing water so that ear will not get blocked. So these are simple things but very important for the health of the ear. And also like whichever is causing these are all preventive measures. Okay. But as you come to the treatment modalities, right. So if it is a treatable cause like wax, we remove the wax. If it is an infection in the middle ear, infection in the damage to the eardrum, we treat that. If there is any associated lesions, like there could be a small tumor in the ear, that we will address by various modalities from ear to the brain. If there is any swelling or any damage to the ear, which is tumor is causing problem to the
thing like in the internal auditory meatus, brainstem, in the brain, or any vascular disorders in the brain, depending on the lesion, whether it is a ENT surgeon or a neurosurgeon, a neurologist, various specialties, Right. they come into the picture to take care of the patient. So it all, and also there are good, wonderful medicines are coming, which are not available earlier. Okay. So these things, particularly ginkgo biloba is one thing, vimpocetin is one thing, piracetam is one thing, and one more is caraverin. These are wonderful medicines giving They're good working for the response to tinnitus. the, yeah. So Okay. they respond, they take care of the neurological damage caused by these various factors, All right. and heal the inner ear hair cells which are caused for the thing. And also sometimes like there are devices called tinnitus masker, one thing, and tinnitus relief devices. Okay. So these are very That is important devices. interesting. Okay. Yeah. So they work at a neuromodulation level. This All tinnitus relief device that works at the neuromodulation device, where a band of sound is sent into the ear. Okay. It works even for normal hearing person, who is having tinnitus, and also for patients who are having hearing loss with tinnitus. All right. So, but the other one, what's called tinnitus masker, you have to wear it for a long time Okay. throughout the day, Okay. and also it doesn't have any modulation. The volume cannot be modulated. Okay. So that has limitations, but it is also one way of treating the problem. The other one, tinnitus relief device, it is recently invented. Indian scientists have created this one, and it is giving 90% relief to the patients. That's wonderful to So know. these are all recent advances in tinnitus treatment. So once you are aware of causes and also treatment modalities, you will be aware that you will be able to take care of yourself to prevent it. And if it is problem is there, you attend to the doctor to Visit get the doctor at the right treated. time. So very well explained, Dr. Prasad. आपने ट्रीटमेंट मोडालिटीज के साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हमारी जनता को बता दिए हैं, और आज हम लाइव है, जनता हमें देख रही है. एनी पर्टिकुलर मैसेज आप हमारी जनता को देना चाहते हैं? Yeah, prevention is always better than cure. So be careful about your lifestyles, careful about your habits, careful about your health, so which can prevent a lot of health issues, particularly today's topic regarding tinnitus, which will avoid you to go into hospitals and doctors, and also spending a lot of money on your thing. You can save a lot of things if you prevent the things. So prevention is better than cure, I want to say. सो व्यूअर्स, आपने देखा डॉक्टर प्रसाद ने हमें इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है टिनिटस के बारे में, जिसे हम एक आम बीमारी समझ रहे हैं, पर वो आम नहीं, एक गंभीर समस्या भी बन सकती है, हियरिंग लॉस की भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो डॉक्टर प्रसाद ने बोला प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो बेटर वी क्योर इट बाय प्रिवेंटिंग इट. डॉक्टर प्रसाद ने हमें बताया है कि हमारे पास सिम्टम्स हैं, बट हमारे पास इलाज भी है, हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स भी है. क्या कर सकते हैं हम कोल्ड का अवॉइड करें, कोल्ड है तो हम ट्रेवल ना करें, और हमें साउंड पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए. स्टॉप हॉन्किंग, इट शुड बी परमिसिबल इन इंडिया, आई फील लाइक, क्योंकि बाकी कंट्रीज में जैसे स्टॉप हॉन्किंग रुक चुकी है, हमारे यहाँ पे बहुत शोर शराबा है. ऐसा ना हो कि हम सभी इस बीमारी का शिकार हो जाए. पर फिर भी अच्छी खबर ये है कि हमारे पास डॉक्टर प्रसाद जैसे काबिल डॉक्टर मौजूद है. अगर कहीं भी सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर के पास विजिट करें और समय पे इलाज कराएं, और हमेशा की तरह समय पे खाएं, संतुलित खाएं, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्टर प्रसाद ने भी बताया, स्ट्रेस से दूर रहे और स्ट्रेस को दूर रखें. सो व्यूअर्स, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद CanWinn. Thank you, Dr. Prasad, for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you so much, Shalini ji. Thank you, CanWinn Foundation, for giving me the opportunity to express my views. Thank you, viewers, for viewing our interview. Thank you so much. Thank you.